One of the BJP's big promises in the northeast was an immediate halt to illegal immigration from across the border in Bangladesh. So how have lakhs of immigrants crossed over despite border fences and armed patrols? Manogya Loyawal travelled to the Zero Line to find out. Crossing the Indo-Bangladesh border to get to the other side may not be all that tough. Headlines Today makes one such attempt to show you how easy it is to get past the security apparatus. We took a speeding boat down the Brahmaputra River from Assam's Dhubri district, crossing one island after the other, leaving the main hinterland behind, on our way to the Zero Line, the international border. The state of security is shocking, to say the least. There are areas in Indo-Bangladesh border where fencing has been very proper. Interestingly, even though there has been river erosion, not much could be done as far as the fencing is concerned. Beyond this barbed wire, around 145 yards is Indian territory into which the Indians are allowed only during selected hours. However, when a person goes missing, it is taken up by the higher authorities. But that's not all. What we find ahead is a 40-kilometer stretch, totally unmanned. The same route taken by immigrants to enter the Indian side. The border security force refused to speak to Headlines Today after repeated attempts. The issue of illegal immigrants into India spiraling out of control. Even the Assam government agrees. हाँ, दो चार एरिया में लोग आ सकते हैं, लेकिन अभी मेरा जो सोच है तो बांग्लादेश से ऐसा कोई लोग आने वाला नहीं है. बेसिकली वो लोग बिफोर इंडिपेंडेंस बांग्लादेश से काफ़ी लोग तो इंडिया बांग्लादेश तो सेम ही था, तो उसी टाइम काफ़ी लोग यहाँ आया था. River Brahmaputra forms the border between the two countries at many places. We reached Brahmanpada in Bengal and then travelled to Pakura in Bangladesh. There are creeks and rivulets that are easy routes for bypassing the guarding authorities. Bad weather comes as a boon for the migrants and a bane for the BSF. मेन बात तो यह है कि 3 लाइन सिक्योरिटी सिस्टम जो है, स्टेट पुलिस है, बीएसएफ है और फेंसिंग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर में, जो फेंसिंग का बारे में बहुत कुछ बात बोला जाता है, ये सब कुछ तोड़ के कैसे आदमी लोग आता है मतलब बॉर्डर का उस तरफ से, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और मेरा ख्याल में जो है इन्फ्लिट्रेशन प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऑनेस्टली और सिंसियरली इसको सॉल्व नहीं करना मांगता है. The fact is that Assam has been victim of porous border, which has been used as floodgates for entry into the region. Boats and ships regularly ferrying people from one islet to the other. Once you are in the Indian territory, the demography helps you do the rest. नदी देखिए, नदी तो आसान जरिया, सब कोई जगह ही आसान जरिया होता है, लेकिन हम लोग का इधर तो रिवर पुलिस है और बीएसएफ का भी वाटर विंग है. हम लोग का, मेरा बोलने का बात यह है कि ये लोग करते क्या है, क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर जो है हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन लोगों के पीछे खर्चा करते हैं, आपका मेरा सबका, लेकिन ये पैसा जाता है कैसे? It's the strongly knit network of local villagers and some agents. The nexus is extremely strong, with people posted in strategic places misusing authority. बांग्लादेशी घुसपैठ की जो समस्या है, इसमें एक नेक्सस काम करता है. वो एक अंतर्राष्ट्रीय चक्र भी है, जिसमें बांग्लादेश में कुछ एजेंट हैं और कुछ हमारे देश में भी हैं, और साथ साथ बीएसएफ के लोग भी इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं. ऐसा बीच बीच में अखबारों में आता है कि 250 रुपया देके, 300 रुपया देके, 400 रुपया देके बांग्लादेशी आराम से इस देश में प्रवेश करता है. The illegal immigration from Bangladesh has been a burning issue in the northeast of India, especially in Assam, an issue that has serious socio-political implications. Our journey, once again, highlighting the urgent need to up the security in the sensitive border areas. With Manogya Loyawal, Bureau Report, Headlines Today.